इस नवंबर 7 को अमेरिकन्स अपने वोट देने के हक को इस्तेमाल करेंगे, मगर शायद इस साल वोटर्स थोड़े नाराज हैं। इसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग की कमी और तस्दीकशुदा कागजी सबूत की मौजूदगी ना होना है। I am concerned about it, and particularly in close elections. I'm very concerned about it. And I do think it's important that people have a feeling that at least the count is correct. वोट देने का सिलसिला अमेरिका में तकरीबन 350 साल से चला आ रहा है, और किसी भी जमहूरी मुआशरे की तरह अमेरिका में भी हर शहरी का वोट बहुत अहमियत रखता है। I think it's absolutely critical. People die for the right to vote all over the world. मगर वोट देने का तरीका हर सदी में बदलता रहा है। पहले लोग कागज इस्तेमाल करते थे, फिर बैलेट मशीन्स मुतारिफ कराई गईं, मगर अब वोट देने का तरीका हाई टेक हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ने वोटिंग को हमेशा के लिए बदल दिया है। मगर इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या वोटर्स को फायदा पहुंचेगा या नुकसान? There's a very big difference between ATMs, for example, and electronic voting machines. And some of the issue comes in the fact that votes need to be secret by design in our democracy. And so the same information that can easily travel on a receipt from a bank teller cannot travel on any kind of voting record. Because it's just counterintuitive. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में आसानी तो है, मगर कोई कागजी सबूत नहीं कि आपने वोट दिया भी है या नहीं, और अगर वोट दिया है तो आखिर किसको। Today's machines, I think we do need a lot more validation of the machines that have been sold into the public now. But there is no paper trail in the machine, so how do we make sure? Well, in the District of Columbia, where I am the president of the league, we have paper ballots which are scanned electronically, and that electronic scan becomes an electronic record. But the paper ballot is still there, and should there be a challenge or a close election, the paper ballot is kept under lock and key. कुछ माहिरीन का कहना है कि अवाम और इलेक्शन ऑफिशियल्स दोनों को ना तो इतनी खास ट्रेनिंग मिली है और ना ही इस टेक्नोलॉजी पर अभी से इतना भरोसा किया जा सकता है। There are really many opportunities for changing the vote or getting improper votes. I mean, we don't want to discredit our elections, but there always has been a certain amount of difficulty in being sure about the final count in a very close election. कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना अब एक आम सी बात हो गई है। There's a little tendency in the computer world to advertise magic, advertise computers as magic, and they're not magic, and they need to be watched just like any other kind of a counter or recorder. It's a very attractive but error-prone process. There's nothing magical about or secure about computerized records. In fact, I would say they're much less secure than paper records. इसीलिए लोग चाहते हैं कि पुराने बैलेट सिस्टम से ही वोट दें, ताकि उनको मालूम रहे कि इन्होंने किसको वोट दिया, और वक्त पड़ने पर या दोबारा गिनती की सूरत में इसकी तस्दीक भी की जा सके। We have to recognize these problems, and there's nothing on earth that is perfect, but there is a lot of work to do with this new technology, a lot. कुछ माहिरीन का कहना है कि गलती इंसान और मशीन दोनों से हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में जो भी मसला है वो ऐसा नहीं जिसे ठीक न किया जा सके। Well, people can allege anything they want, but our experience with the machines has been very positive. मगर इन सब बातों के बावजूद लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर शहरी अपना वोट जरूर दे। I think will be more apparent to people, and they'll know that they need to pay attention to policy more than personality, and that their vote really does matter. क्योंकि एक वोट से भी कहानी बदल सकती है। As a citizen of the United States of America, would you still go out and vote?
Oh, of course, because the only way that you are assured that your vote doesn't count is if you don't cast it. और आखिर में जब लीग ऑफ वुमेन वोटर्स की सदर से ये पूछा गया कि इनको किस पार्टी पर भरोसा है, तो इनके दिल से ये जवाब निकला. Which party do you trust? We don't give any such disclosures in. As a citizen of the United States of America, you know, if you step outside of League of Women Voters, as a citizen of USA, who do you really trust? Nobody. I keep my powder dry. वोटिंग चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली करें या पुराने अंदाज के हाथ के बैलेट से, असल बात यह है कि जब तक हम जाके अपना वोट नहीं डालेंगे, हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये वोट सही था या गलत. इमरान सिद्दीकी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन.